students, all of you, welcome back to your own channel, Vedantu Science Olympiad. This is Baswa Raj, sir, students, your biology master teacher. Welcome all of you students. In today's class, we will be starting with a brand new chapter. All of you think this is a chapter which will make you connect with yourself. This is a chapter which will make you realize how important this heart is. So, this chapter is very important. बहुत कुछ है यहाँ पर पढ़ने के लिए और उसके साथ साथ बहुत सारे मजेदार concepts भी है students. So if you are ready students, if you are ready, all of you in the chat, if you are ready, quickly add some thumbs up, hearts, fire, whatever you want students, whatever you want you add. Okay, so what we'll do is we'll take this chapter a little slow. We will take it slow and understand something detailed here. Okay, because after this there is a big surprise coming up, a big surprise coming up in the coming days on the channel, so be prepared for that also. Now students, now all of you, can anyone think how old do you think our knowledge is about entire system of us? How long, students, how old do you think the knowledge which we have is about the circulatory system? 100 years old, 200 years old, 300 years old? इसका knowledge है ना, इस knowledge का, the circulatory system, this knowledge of circulatory system, do you know how old it is? Okay, let me give you a small hint. Student, hint. Okay, how many of you know about mummies? Students, how many of you know about mummies? कभी देखा है? Real life में नहीं, movie में, कहीं show पे या कहीं photo पे. Students, did any one of you ever know about this entire mummy? Yes, you know about it. And if you know about mummy, right, there is something called, students, the papyrus. In this papyrus script, it is a 68-foot long script. इस script के अंदर लिखा है, क्या लिखा है student? देखो, script के अंदर लिखा है, in the heart are the vessels to the whole of the body. As to these, every physician will feel them when he lays his finger on the head. Feel करो, यहाँ पर एक vein जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पर कुछ? On the back of his head, on the hands and on the stomach region, on the arms, on the legs too. Everywhere he feels his heart because it vessels runs all his limbs. So the knowledge, the amazing knowledge of circulatory system is more than 5,000 years old. So can you imagine? Back in the day itself, they knew about something called as circulatory system. In this circulatory system, they knew something is connected from the heart. Something from the heart is going everywhere to every single body. And that is what we will be studying in today's class, students. That is what we'll be studying in today's class. So all of you ready, students? All of you ready? Yes? Is every single one of you ready, students, to understand what exactly is the circulatory system? What are the components of circulatory system and how do we even learn about them? Okay, students, shall we start, all of you? So with this amazing knowledge, let's start today's class with the human circulatory system. Now, if you ask me to divide the entire circulatory system into three parts. The three parts is the circulating fluid. Does anyone know an example? Does anyone know which circulatory fluid I'm talking about here? There are mainly two. I will tell you, students, I will tell you after this. Okay. Then there is heart, obviously, students. You're talking about circulation of something and you don't include heart, बुरा लगेगा, students, बुरा लगेगा. Okay. Then we have the blood vessels. So all three of them are very important, integral part of the human circulatory system. ठीक है, हम ये तीनों काम करेंगे. Okay, so one by one we'll be studying about in case of humans. But students, do you think you can find a heart in students? Can anyone give me an example of any low phylum? Anyone? Some low phylum, which is the first phylum? Animal kingdom पढ़ा ना सबने, सब लोगों ने. अगर आपने animal kingdom पढ़ा है तो सबसे like primitive phylum is porifera, sponge, है ना, जिसे हम रगड़ के नहाते हैं ना, तो sponge. So in the case of porifera, in the not monera, I'm talking about phylum. Okay, phylum. Okay, not organisms. Classification. Phylum, in phylum porifera, let's or coelenterata, right, or cnidaria, right.
do you find blood? Students, do you find blood there? Blood. Do you find heart? Do you find blood vessels? No. So in those organisms, we do not find any of those. But if you remember, students, in the animal kingdom, students, yaad hai na animal kingdom? Do all of you remember animal kingdom, students? In animal kingdom chapter, we learned in the case of porifera. In the case of porifera, यहाँ को इसके लिए एक स्टेज भी बनाएंगे, स्टेज है ना. इस porifera में there are a lot of small holes here. Do all of you remember? Small holes. These small holes are called as what, students? They're called as what? Ostia. So इस ostia से लेके ना, with the help of this ostia, water was entering inside. Water was entering inside through the ostia, and through osculum it was going outside. Even in the case of your different types of your, coelentrates also, same case was there. So in such lower phylums, we do not see blood. Blood is absent. यहाँ पर पूरा पानी का खेल है. यहाँ पर पानी अंदर लेकर आओ, पानी से यूज को, पानी जब अंदर आ रहा है ना, जब पानी अंदर आ रहा है, पानी के साथ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, सब कुछ अंदर आ जाएगा आराम से. So in lower forms we do not see all this, but in the higher forms like humans, yes, in the higher forms like humans, we see something called as your blood vessels, and we see the lymphatic system also. Okay, so the more complex organisms use special fluid, very special fluid, students, within their body to transport such material. What? We have the blood. खून है हमारे अंदर, खून. Students, हमारे अंदर क्या है? खून है हमारे अंदर. So blood is the most commonly used fluid by the most of the higher organisms, including humans. Along with blood, students, listen to me very carefully. Along with blood, we also have something called as lymph. Lymph, for now you can call it as tissue fluid, but अगर हम आगे जाके पढ़ेंगे lymph, what is lymph, I'll teach you that time, one more time. So right now remember, inside humans, inside complex organisms, we have two types of fluid. We have blood, we have lymph. Okay, now all of you in your mind, there will be one question. This blood and all is okay, but blood क्यों चाहिए हमको ये? Like हमको क्यों चाहिए खून? Students, can anyone tell me why do we even need this blood and lymph? Why do we need blood? To survive, yes, to survive, blood is important, but what is the actual role of blood and this entire capillaries and everything? Okay, let me teach you. Listen to me very carefully, students. Listen to me very carefully. Okay, now, students, what are we made up of? Students, what are we made up of? We are made up of what? Cells. Cells joined together to make a tissue. Cells joined together to make a tissue. Okay, so let's take one tissue here, shall we? Let's take one tissue, student. Let's take one tissue here. This right here is a tissue. This right here is a tissue. Now students, इस टिश्यू को जिंदा रखने के लिए हमको क्या चाहिए? अगर एक टिश्यू को काम करना है ना, if it has to do something called as respiration, what does it require, students? If you know the respiration process, like glycolysis, or it could be I'm talking about aerobic respiration. Glycolysis करना है, Krebs cycle करना है, etc करना है. So this tissue needs what, students? This tissue needs a constant supply of two main items, students. Two main items. All of you. It needs something called as oxygen plus nutrition. है ना? Nutrition चाहिए. In the form of glucose, it needs glucose. Right? So this oxygen and this nutrition, let's say glucose, it is entering through what, students? It is entering through a blood vessel, and this blood vessel inside, students, what do we have? Students? We have the blood. So blood is the medium. By which all the nutrients and oxygen is entering a tissue. Okay, now let's say tissue के अंदर oxygen use हो गया, nutrients भी use हो गया. So do we get some kind of metabolic waste? है ना? There is a major metabolic waste which we learned in previous chapter in breathing and exchange. The major metabolic waste is CO2. Now all of you, CO2 is bad for us or good for us? CO2 is very bad it is.
very bad, right? So this exactly, this entire CO2 has to be removed outside. CO2 have removed outside, yes or no? And entire removal of CO2 also happens with the help of blood. It gets, students, all of you remember yesterday's class, right? CO2 can get dissolved or bicarbonate, or this CO2 can form a bond with hemoglobin also, carbinohemoglobin. It can transport outside. So do we need blood, students? All of you, do we need blood? Yes, we need blood. Our cells and tissue needs blood because blood helps in transportation of the requirement such as oxygen and nutrients. Students, इतना समझ आया सबको? इतना कॉन्सेप्ट समझ आया? आराम से समझेंगे, बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है? Now students, now we learned about circulatory system. We have the circulating fluid, heart, blood vessels. Fluid, we learned about two types of fluid, blood as well as the lymph. Blood as well as the lymph, we learned, students, we learned about blood and lymph. Okay, now students, these are the two different types of fluid, right? Blood, fluid connective tissue, transport oxygen, nutrients, antibodies, etc. And lymph is what? Colorless fluid, carries immune cells and nutrients. This we will learn later on. Now students, now what is the meaning of, now let's understand the definition of blood, shall we? Definition of blood. Now if I say what is blood, what will you tell me, students? If I tell you what is blood, what will you tell? So blood is what? It is very special. Blood is what, students? Blood is very special. It is a special connective tissue. So this right here is a definition of a blood. It is a special connective tissue, students. This is a special connective tissue, right? Consisting of fluid matrix, plasma and formed elements. So all of these are present where? Inside the blood. They're present inside the blood. Now, when I say it is a special connective tissue, what is so special about it, students? What is so special about it? So let me tell you. Blood is so special because it doesn't have any fibers in it. It doesn't have any fibers in it. Agar socho, students, agar socho, we have a pipe. We have a pipe. In that pipe, water is flowing. There's one pipe. In that pipe, water is flowing. Now, all of you, when the water is flowing, what will happen if we keep one small barriers inside? अगर कुछ यहाँ पर कुछ आगे तो अच्छा लगेगा क्या? If you bring a lot of fibers inside, will it be good? No, it is not good. So there is no fibers here. It is fluid. It is a fluid matrix. Students, it is fluid connective tissue. It is called as fluid connective tissue. Fluid connective tissue, students. Why is it called as fluid? Because of fluid matrix. Fluid matrix. यहाँ पर कुछ भी तरह का fibers नहीं होता. There's no fibers. Fluid matrix. Why is it called connective tissue? Because it helps in linking different organs. It helps in linking tissue because it is made up of cells. So fluid connective tissue. It is fluid connective tissue. Fluid because of fluid matrix. Connective because of it. It helps in linkage. And tissue because it is made up of cells. Next topic. Now students, what are the functions of blood? This we will learn later also. But right now let's focus a little bit. Okay, it helps in delivering on CO2 and O2, carries nutrients, waste products and hormones, maintains pH, temperature of the body, है ना? गरम खून बोलते हैं ना, बहुत गरम खून, ऐसा कुछ होता है, खून गरम होता है पर बहुत ज्यादा भी गरम नहीं हो जाता, ठीक है ना students, right? So temperature of the body, clot formation prevents blood loss and defends against pathogens. This you will learn right now, students. This you will learn right now. Now all of you, let's do an experiment right now, students. Let's do an experiment. Students, let's do an experiment right now. All of you ready for experiment? Students, ready for experiment के लिए ready हो? A small experiment. Okay. Now students, अगर आपने कभी घर के अंदर मिक्सी यूज किया, मिक्सी को पता है, मिक्सी यूज किया, कभी यूज किया होगा सबने मिक्सी, है ना? Now उस मिक्सी की तरह ही there is one more instrument called as centrifuge. Students, how many of you heard about it? How many of you heard about centrifuge? How many of you heard about centrifuge? Centrifuge is a machine
which helps you to separate components of anything. अगर आप थोड़ा सा दूध लोगे, दूध ना, पता है दूध, पता है ना, मिल्क, अगर मिल्क लेके आप इस सेंट्रीफ्यूज में डालोगे तो क्या हो जाएगा? अगर मिल्क को लेके सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालने से मिल्क के अंदर का पानी और लिपिड्स दोनों सेपरेट हो जाएगा. तो सेंट्रीफ्यूज इज अ मशीन व्हिच हेल्प्स टू सेपरेट थिंग्स बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Okay, so it can separate two things. Now I will show you the machine, students. I'll show you the machine. हाँ, मशीन कहाँ गया स्टूडेंट? मशीन नहीं है स्टूडेंट, मशीन मिसिंग हो गया स्टूडेंट्स. स्टूडेंट देखना मशीन. I'll show you in Google. I'll show you in Google. Wait, centrifuge machine. स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रीफ्यूज मशीन. देखो इस तरह से होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन, है ना स्टूडेंट्स? ये देखो 53,000 रुपीज, 1 लाख का मशीन है, 1 लाख का. तो बहुत कॉस्टली आइटम है, बहुत ही हमारे थोड़ा बजट से थोड़ा ज्यादा ही है. तो चीप वाला भी आता है, पर चीप वाला उतना देखो मत, चीप वाला ये अच्छा वाला है. देखो सो यहां पर क्या होता है पता है? देखो इमेजेस ओपन करते हैं. देखो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूज मशीन. इसके अंदर हम ट्यूब डालते हैं, इस तरह से ट्यूब डालते हैं, ट्यूब्स डालेंगे, उसको क्लोज करेंगे और ये घूमेगा, बहुत जोर से घूमेगा. घूमते ना सारा कंपोनेंट्स निकल के बाहर आ जाएगा. सो इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में अभी हम क्या डालेंगे पता है स्टूडेंट्स? इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में अभी हम क्या डालेंगे? इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम अभी अपना खून डालेंगे. स्टूडेंट कौन देगा खून, जैसे बताओ. लेट्स से मैंने मेरा अपना हाथ काट लिया, हाथ काट के थोड़ा सा एक 10 ml का ब्लड निकाल लिया मैंने. 10 ml का ब्लड ना इसके अंदर जाएगा, अभी इसके अंदर जाएगा. अभी इसके अंदर ब्लड जाने के बाद अभी हम इसको घुमा रहे हैं, बहुत तेज से घुमा रहे हैं. सो घुमाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? इस तरह से हमारे ब्लड का सारा कंपोनेंट्स अलग हो जाएगा. हमारे ब्लड का, मेरे ब्लड का, हमारे नहीं, मेरे ब्लड का, ठीक है, मेरे ब्लड का सारा कंपोनेंट्स अलग हो जाएगा. अलग हो जाने के बाद हमको क्या दिख रहा है अभी हमारे पास? सो व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड सेपरेट आउट, व्हाट डू यू फाइंड? मेजर कंपोनेंट around 55% of the component is called as plasma. 55% क्या है इसके अंदर? 55% प्लाज्मा है. और जो रिमेनिंग पार्ट है ना, रिमेनिंग पार्ट इज जस्ट 45%. उसमें क्या है? WBC है, RBC है, ये सब कुछ है. ओके, सो द मेजर पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स. आगे पढ़ाएंगे. देखो स्टूडेंट्स, देखो सो अगर हम ब्लड देखेंगे, है ना, माइक्रोस्कोप के अंदर, आरसीबी नहीं, आरसीबी नहीं, आरबीसी. तो मैट्रिक्स में क्या होगा? मेनली मैट्रिक्स के अंदर होगा प्लाज्मा और सेल्स बनेंगे हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, हम इस प्लाज्मा, कहीं पर सुना है ये नाम कहीं पर सुना है तुमने स्टूडेंट्स? कहीं पर सुना होगा ना, साइटोप्लाज्म, राइट, प्रोटोप्लाज्म, सुना कभी? सुना होगा स्टूडेंट्स, सुना होगा आपने. नाउ व्हाट इज प्लाज्म बेसिकली हैज अ लॉट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, वाटर मॉलिक्यूल. सो इस प्लाज्मा में क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? मेनली इस प्लाज्मा के अंदर, ओके, इस प्लाज्मा के अंदर मेनली क्या होगा स्टूडेंट्स? वाटर होगा. अभी आगे जाके पढ़ेंगे हम, ठीक है. Now students, now let's understand the blood is divided into plasma as well as formed elements. Now इस प्लाज्मा के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने जैसे बताया, इस प्लाज्मा के अंदर so plasma is around 55% is plasma, 45% is formed elements. इस प्लाज्मा क्या के अंदर है स्टूडेंट्स? इस प्लाज्मा के अंदर ना 90%, 92% स्टूडेंट्स, 90 to 92%, ठीक है, इसके अंदर पानी होता है. हर जगह पानी, हमारे अर्थ की तरह पानी होता है. उसको छोड़ के ना 6 से 8% इसके अंदर प्रोटीन्स मिलते हैं, मजेदार प्रोटीन्स. उसको छोड़ के थोड़े आयोन्स भी होते हैं, उसको छोड़ के थोड़ा न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और उसके साथ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी मिलते हैं इसके अंदर, क्लॉटिंग फैक्टर्स. टोटल 12 क्लॉटिंग. स्टूडेंट्स, इफ यू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, टोटली पहले 13 थे. इनिशियली वी हैड 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, नाउ वी हैव 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स.
I think 6 1 is removed, I guess 6 something is removed. Okay, so we have clotting factors also. Okay, so all of this, yes, different types of ions are present. Yeah, ions are present. So this is all part of your plasma. I can show you students here. So we have sodium, calcium, magnesium, bicarbonates, chloride ions. So ये सारे minerals इसके प्लाज्मा के अंदर होते हैं. Nutrients like what students? Nutrients like glucose, amino acids, lipids, all are present. ठीक है? Then proteins ना, this is very important. This is very important. This is very important. किस तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं स्टूडेंट्स? किस तरह के प्रोटीन्स मिलते हैं हमारे प्लाज्मा के अंदर? देयर आर 3 मेन प्रोटीन स्टूडेंट्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन. नाउ इस तीनों का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, 3 प्रोटीन्स का बहुत फंक्शन इंपॉर्टेंट है. बताना मैंने प्रोटीन्स, इस प्रोटीन्स का 3 है ना यहां पर, इन तीनों प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहां पर. ठीक है, नाउ लेट्स से फर्स्ट वन इज एल्बुमिन. एल्बुमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस, दैट इज इट हेल्प्स इन पीएच बैलेंस. It helps in balancing the pH. Then fibrinogen, students, fibrino मतलब क्या है? fibrino मतलब क्या है? फाइबर, है ना? अगर आपको कभी चोट हुआ है स्टूडेंट्स, गिरो कभी? Have you ever gotten fallen somewhere? किसी के ऊपर नहीं, ग्राउंड पे कभी गिरे हो स्टूडेंट्स? कभी तो गिरे होगे ना, कोई तो, है ना? तो अगर आप कभी भी चोट हुआ है ना, तो यू विल नोटिस थोड़े 2-3 दिन के बाद ना वहां पर थोड़ा फाइबर्स लगता है, मेश. इट लाइक अ मेश लाइक स्ट्रक्चर. स्टूडेंट बाहर बहुत जोर बारिश आ रही है, तो अगर लाइट चली गई ना तो क्लास खत्म हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत एक मेश है, बहुत सारा मेश लगा हुआ है. सो दैट मेश इज बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स, मेश इज बिकॉज ऑफ योर फिब्रिनोजन. Fibrinogen are needed for the clotting or coagulation of blood, so it helps in clotting. Now students, can anyone tell me, all of you, what is this? Student, what is this? What is this? All of you, can anyone tell me what is this? All of you, what is this? Immunoglobin. Globin. What does it help in? Antibody. It helps to protect us. It is a protein, I know. Which type of protein? It helps in immunity, right? So globin primarily are involved in defense mechanism of the body. कुछ याद रखने का है ही नहीं. So this both of you can remember, fiber or globulin, immunoglobulin. It helps to fight against antigens and everything. हो गया. तो ये वाला थोड़ा याद, albumin you have to remember. Albumin helps in osmotic balance, that it helps in balancing the pH. तो ये 3 तो याद रहेंगे स्टूडेंट्स. All of you can remember these 3. All of you can remember these 3 students. Yes or no? All of you can remember these 3. So these 3 are different types of proteins present in your plasma. So plasma में क्या मिलता है स्टूडेंट्स? प्लाज्मा के अंदर पानी होता है, हर जगह पानी पूरा. फिर प्रोटीन्स मिलते हैं, 3 तरह के प्रोटीन, आयोन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सोडियम आयोन्स. ठीक है, उसके बाद it has nutritions. Which type of nutrition? It has glucose, amino acids and everything. And then clotting factors are also present. Okay, so any doubt students here? Any doubt in plasma? Any doubt in plasma students? Any doubt in plasma? Okay, अगर कुछ डाउट नहीं है ना यहां पर, एक प्लाज्मा में बहुत ही अमेजिंग डेफिनेशन है. एक सुन लो एक बार, इसके अंदर एक डेफिनेशन है. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये वाला कहां पर गया, यहां पर देखो. प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, हमने पढ़ा था ना वहां पर क्लॉटिंग फैक्टर करके. क्लॉटिंग फैक्टर्स थे कितने? 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स थे ना वहां पर. अभी 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना. यस, प्लाज्मा इज सिमिलर टू, बट नहीं स्टूडेंट्स, प्लाज्मा कलर नहीं होता. तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम. बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. इसको हम एक डब्बे में लिख लेते हैं. अभी यहां पर एक डब्बे में थोड़ा मार्क कर देते हैं. सो इतना याद रखो वाला. सो व्हाट इज सीरम? प्लाज्मा विदाउट अ क्लॉटिंग फैक्टर. अगर क्लॉटिंग फैक्टर को उठा दे, निकाल दे वहां से, फेंक दे बाहर, और हमको क्या मिलेगा? एक सीरम मिलेगा. स्टूडेंट्स आपने देखा होगा आपने अगर कैप्टन अमेरिका देखा है ना, कैप्टन अमेरिका में क्या होता है? सुपर सोल्जर सीरम होता है. सुपर सोल्जर सीरम, जिससे कैप्टन अमेरिका को स्ट्रेंथ मिलता है. गामा सीरम, हल्क को स्ट्रेंथ मिलता है, हल्क को, है ना. आपने देखा होगा मूवीज के अंदर. दैट इज अ सीरम. ओके, दैट इज अ सीरम स्टूडेंट्स. ओके,
Clear students? Clear? Clear all of you? Now we come to formed elements. So students, meaning, what is the meaning of formed? Anyone? What is the meaning of formed? Formed माने बनना. So ये सारे के सारे different types of formed elements are technically formed. They're formed. Okay, they're made by somewhere. From somewhere they're getting created from somewhere. Okay, they're getting created from somewhere. So here we have mainly three types, students. Formed elements are of three types here. Okay, one is called as your RCB. No student, not RCB, RBC. Red blood cells, white blood cells, and platelets. And platelets. Okay, and platelets. So all three are called as formed elements. Any doubt here? No doubt. Now let's talk about your favorite RBC. Okay, so there are three different types of your formed elements: platelets, red blood cells, white blood cells. Now हर एक formed element का एक scientific नाम भी है, नामकरण किया किसी ने, ठीक है? So scientific नाम को भी पढ़ेंगे अभी हम यहाँ पर, scientific नाम को भी. Now the first one is called as your erythrocytes. Erythrocytes. Erythrocytes are called as your red blood cells. Okay, they are most abundant cells in our blood. So if someone asks you which is the most abundant cells in our blood, RBC students. Okay, now 5 million to 5.5 million of RBC per microliter of blood or mm cube, right? So a lot of RBC is present. Why? Because we need oxygen. Okay, now have lifespan of 120 days. Here they have written graveyard. Spleen is called as graveyard of RBC. So if spleen is the graveyard of RBC, what is the born location, students? Anyone students? Which is the born location? Where is the origin happening? The origin is happening in the red bone marrow. In the red bone marrow, students. यहाँ पर था ये वर्ड, यहाँ पर उड़ के यहाँ पर आ गया था ये वाला. निकालते हैं एक मिनट, यहाँ पर डालते हैं इसको. कहाँ गया? यहाँ पर है, देखो. These are called as the red bone marrow. ठीक है? In the bone marrow cells, in the red bone marrow cells. So इसके अंदर ना हमारा RBC का जीवन हो रहा है. उसके बाद 120 डेज के बाद अप्रोक्सीमेटली हमारा RBC का लाइफ साइकिल खत्म हो गया और स्प्लीन में जाके अपने मर जाएगा आराम से आगे. ठीक है स्टूडेंट्स? सो बोन मैरो, रेड बोन मैरो. ओके, एंड द डेथ प्लेस इज कॉल्ड एज स्प्लीन. नाउ व्हाट इज बाइकॉन्केव शेप? बाइकॉन्केव शेप, ऑल ऑफ यू नो दिस इज कॉल्ड एज बाइकॉन्केव शेप. चपटा हुआ अंदर से, ठीक है, अंदर से पिंच. स्टूडेंट्स बाइकॉन्केव लाइक डोनट. देखो डोनट शेप बता दो, डोनट शेप याद रहेगा ना, डोनट शेप सब लोग. डोनट शेप, डोनट शेप. पर डोनट बीच में छेद होता है तो छेद नहीं है उतना डिफरेंस, क्योंकि एक सेल है यहां हमारा. ठीक है ना स्टूडेंट्स? ना बाइकॉन्केव शेप हो गया, बाइकॉन्केव शेप हो गया. ममेलियन आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड. माने क्या? इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. सो न्यूक्लियस इज एब्सेंट हियर. न्यूक्लियस इज एब्सेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. न्यूक्लियस इज एब्सेंट हियर. न्यूक्लियस है ही नहीं इसके अंदर, है ही नहीं. सो स्टूडेंट्स इफ देयर इज नो न्यूक्लियस, टेक्निकली स्पीकिंग इट डज नॉट अंडरगो सेल डिवीजन. सेल डिवीजन अगर करना है तो न्यूक्लियस डिवीजन होना चाहिए ना, कायरोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. अगर न्यूक्लियस ही नहीं है इसके पास, सो कैन आई टेल देयर इज नो सेल डिवीजन. सो दिस आरबीसी सेल विल नॉट डिवाइड. ओके, सो नो सेल डिवीजन हियर. नो सेल डिवीजन. बहुत इजी है, बहुत ही इजी है सर. नो सेल डिवीजन. ठीक है, नो सेल डिवीजन. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ कॉर्पस्कुल्स दैट इज नो ऑर्गेनल्स है. यहां पर हर एक ऑर्गेनल बाहर निकाल दिया हमने, क्योंकि हम इस आरबीसी के अंदर ना सिर्फ एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे हीमोग्लोबिन, भर भर की हीमोग्लोबिन. देखा स्टूडेंट्स, वो रिक्शा होता है ना, रिक्शा देखा ना, रिक्शा, वो स्कूल जाने वाला रिक्शा. उसके अंदर एक छोटे से रिक्शे के अंदर कितने सारे बच्चे एक के ऊपर एक बैठे होते, देखा है अभी? एक ऑटो रिक्शा के अंदर ना एक के ऊपर एक कैसे बैठे रहते हैं. उसी तरह से इस आरबीसी के अंदर एक के ऊपर हमारा हीमोग्लोबिन भर भर के है इसके अंदर. हीमोग्लोबिन भर भर के अंदर इसके अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स, आई टेल ब्लड क्लॉटिंग, आई टेल यू स्टूडेंट्स, वेट. शिव ओपी आएगा चैप्टर में, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बहुत टाइम में. ठीक है. नाउ नो ऑर्गेनल्स एज हीमोग्लोबिन, स्टूडेंट इट हैज हीमोग्लोबिन. नाउ अब एक क्वेश्चन है, सबको पता होगा ये वाला क्वेश्चन. हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा मेटल होता है स्टूडेंट्स? व्हिच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? एनीवन?
क्विक 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 क्विक। सो हमारे इसके अंदर भर भर के क्या है स्टूडेंट्स, भर भर के हमारा हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। सो ईच ह्यूमन रेड ब्लड सेल कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 270 स्टूडेंट, ऑटो रिक्शा इज नथिंग, 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एक आरबीसी के अंदर। देखो ये हीमोग्लोबिन भर भर के हीमोग्लोबिन है, बहुत सारा हीमोग्लोबिन, बहुत सारा हीमोग्लोबिन है रेड ब्लड सेल के अंदर, ठीक है। सो इट इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन, contains respiratory gases, carries respiratory gases. 12 to 16 grams of hemoglobin per 100 ml of blood can be found. Okay, so that much of hemoglobin is present inside our red blood cells. Any doubt students here? Any doubt? बहुत easy हो गया हमारा red blood cell. Students अगर ये notes चाहिए तो description में आज मिल जाएगा सारा notes. Okay, ये सारा notes description में मिल जाएगा बाद में, मैं send कर रहा हूँ. Okay, now students, now ना यहां पर थोड़ा एक इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, तो इसको पढ़ लो एक बार, एक ही बार पढ़ लो स्टूडेंट्स, बहुत उतना जोर नहीं है इसके ऊपर। 100 ml ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल कंटेन्स 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन, ये हमने पहले पढ़ा था एक बार, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज लेस इन वुमेन एज दे अंडरगो मेंस्ट्रुएशन। सो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। सो फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन थोड़ा कम ही होता है जनरली, क्योंकि because of menstrual cycle, because of menstrual menstruation, blood loss happens, and because of the blood loss, females generally have less hemoglobin. तो ये पता है सबको, होना चाहिए इतना, okay? So life span of RBC is 120 days, सबको पता है ना? पता है students. Now, hemoglobin molecule plays a significant role in transport of respiratory gases. हमने previous chapter में पूरा पढ़ा था ये वाला, है ना? Old and damaged RBC are destroyed in the spleen, that is a graveyard, and it is known a graveyard of RBC. Done students, done. Any doubt here students? Any doubt in your erythrocytes? Any doubt in erythrocytes students? No doubt, no doubt. Let's go student, let's go. Now let's talk about something called as leucocytes. यहां पर थोड़ा गेम अच्छा है, यहाँ पर तो पढ़ने के लिए बहुत है यहाँ पर leucocytes के अंदर, ठीक है। Now what is leukocytes students? Leukocytes is basically the white blood cells, and they're colorless. So if they're colorless, can I tell they do not have any type of hemoglobin in it? Students, all of you. No, Rishabh, you can make notes, but you will get the notes, don't worry, if you're in class 8th. I have made these notes very easy to understand. Okay, very easy to understand these notes, very easy to understand. Okay, now students, all of you, if it does not have hemoglobin, it does not have hemoglobin at all. यहीं पर लिखा स्टूडेंट्स, पढ़ के बता दिया आप सब लोगों ने, चीटिंग कर रहे हो। ओके, लेस अबंडेंस माने क्या, यहां पर थोड़ा ल्यूकोसाइट्स क्वालिटी इज लेस compared to your 5 to 5.5 million RBC. Here it is less right now students, it is less here. Okay, so less abundant, 6,000 to 8,000 cells per microliter of blood, तो कम है यहाँ पर स्टूडेंट्स। कहां पर 5 to 5.5 मिलियन, कहां पर 6,000 या 8,000, है ना। नाउ शॉर्ट लिव्ड सेल्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शियस माइक्रोऑर्गेनिजम्स, दैट इज आरबीसी मेनली प्लेस फॉर इट मेन रोल इज व्हाट, मेन रोल इज प्रोटेक्शन देगा हमको। हमारे बॉडी के अंदर कोई भी एलियन फॉरेन आइटम अंदर आ गया, ये जाके मार देगा उसको उतने। ये हमारा ब्रो है, हमारा ब्रो, दिस इज अवर ब्रो, ब्रो इज विद अस, ब्रो विल ऑलवेज protect us. Clear, remember that. So it is, if it is nucleated, it means it has the nucleus. Now shape is around spherical to little weird shape here. Exactly spherical नहीं होता, थोड़ा उसके अंदर थोड़ा undulations होते हैं, undulations हमारे अर्थ की तरह थोड़े, ठीक है। Now student, this is where it get interesting right now, very interesting. Understand students, description में डाल देंगे ऋषभ, ठीक है, description में डाल देंगे। Now this is where it get interesting. Now white blood cells can be of broadly classified into two categories. कितने स्टूडेंट्स, कितने, two categories में डिवाइड कर सकते हैं। First one is called as granulated, other is called as agranulated. Granulated माने इसके अंदर granules दिखते हैं, इसके अंदर granules नहीं दिखते, उतना ही डिफरेंस है, ठीक है। Now here we have eosinophils, basophils and neutrophils, basophils and neutrophils, okay. Then under agranulated we have lymphocytes and monocytes, right? Monocytes. Now lymphocytes, we have T lymphocytes and B lymphocytes. Now students, I will give all of you exactly 30 seconds to look at this flow chart and try to get this mental image in your head, all of you.
because this entire information might be new to you. So take 30 seconds time, stare at the board and try to remember those words. बायोलॉजी में बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, तो ये थोड़े वर्ड्स तो याद रखने पड़ेंगे. So 30 seconds I'll give you, remember these words. Time starts now, student. Time starts now. Go. All of you. Go, 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 go. Eosinophils, basophils, neutrophils, lymphocytes, monocytes. Every new स्टूडेंट्स यहां पर एक ट्रिक बताऊं मैं एक. स्टूडेंट्स यहां पर यूजुअली बहुत बच्चों को ये समझ नहीं आता कि सबसे ज्यादा कौन है इसके अंदर, सबसे कम कौन सा है. एक ट्रिक बताऊं स्टूडेंट, एक ट्रिक बताऊं. Like you can remember, you can see this graph and tell me neutrophils is the highest, है ना. Then उसके बाद we have lymphocytes. एक याद रखने के लिए ट्रिक बताऊं इसको. हाँ एक ट्रिक बताते हैं स्टूडेंट, बनाते हैं. हाँ ये बन गया हमारा eosinophils, eosinophils, N for neutrophils, L for lymphocytes, M for monocytes, E for, so there is it, E, eosinophils, E, we'll remove this. M for your monocytes, E for eosinophils, B for basophils. Done. याद रख सकते हो, वरना इसे थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्या कुछ और. कुछ और बना देंगे स्टूडेंट्स, अगर ये समझ नहीं आया तो कुछ और बना देंगे. So you can remember it this way also. All of them, all the different types of granulated and agranulated. You can remember this. और कुछ बनाएंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, तो we can try something later on. Okay. कुछ तो करना पड़ेगा इसके ऊपर. But right now all of you can remember this, right? Eosinophils, basophils, neutrophils, lymphocytes, monocytes. ये सारे के सारे हमारे हैं क्या? WBC है हमारे, WBC. ठीक है, ये सारे के सारे WBC है हमारे. नाउ स्टूडेंट्स, नाउ इसमें सबसे ज्यादा है न्यूट्रोफिल्स, सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स हैं. सेकंड लिम्फोसाइट्स, उसके बाद मोनोसाइट्स, eosinophils, basophils सबसे कम है. नाउ स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन आएगा इस फंक्शन से. क्वेश्चन आएंगे फंक्शन से. हर एक का फंक्शन बताओ, ऐसे पूछेंगे एग्जाम में, ऐसे आएगा हर एक का फंक्शन बताओ. ओके, फर्स्ट विल टॉक अबाउट granulocytes. We have eosinophils. Eosino is basically acid loving, baso base loving, neutro is neutral loving, phil is basically loving. Okay, red color, blue color, purplish color students, purplish color. Okay, now cells take up red stain, obviously cells take up blue stain because function they help in allergic reaction. स्टूडेंट्स को याद कैसे रखना पता है? एसिनोफिल्स मतलब कि एलर्जी आ रहा है आपको, एलर्जी आ रहा है, एसिनो स्नीज करते हो, स्नीज आ रहा है, स्नीज, सो एसिनोफिल्स, सो एलर्जी हो गया. सो टू स्टॉप इट बेसिकली हेल्प्स इन टू स्टॉप एलर्जी, एसिनोफिल्स. याद रहेगा. ठीक है. नाउ basophils students usually helps in it also produces heparin, it produces serotonin and everything that I'll teach you. This you have to remember. Okay, now neutrophil students, phagocytosis, it will basically kill, कुछ अंदर आ गया ना, मार देगा उससे, आके उसको मार देगा न्यूट्रोफिल्स. ठीक है, सो न्यूट्रल रेड, कुछ फाइट करने नहीं देगा, सबको जाके मार देगा, ये अकेला जाके सबको मार देगा. ठीक है, सो न्यू phagocytes. Now let's talk about basophils students that I want to tell you here. See, basophils are least 0.1. Basophils secrete histamine, serotonin, heparin. So all three are produced by the basophils. Okay, they're produced by the basophil students. Heparin is basically a anticoagulant. Heparin पता है ना? Anticoagulant मतलब क्या है? What is anticoagulant? Anticoagulant माने क्या? अगर कोई ब्लड के अंदर ना
हमारे ब्लड के अंदर एक क्लॉग हो गया, उस क्लॉग को भी निकालना है, हमको बाहर निकालना है उसको, क्लॉग को, तब हेपारिन प्लेस अ रोल, हेपारिन प्लेस अ रोल इन एंटीकोगुलेंट। स्टूडेंट्स ये हेपारिन का साउंड, स्टूडेंट साउंड कैसा है इसका, हेपारिन का साउंड कैसा बताओ, हार्पिक की तरह थोड़ा ना, हार्पिक हेपारिन, हार्पिक हेपारिन। हार्पिक क्यों यूज करते हो, बाथरूम क्लीन करने के लिए। तो हमारे ब्लड वेसल के अंदर कुछ अंदर फंस गया, तो हार्पिक डाल के ना, हेपारिन डाल के क्लीन करेंगे हम उसको। सो हेपारिन डज व्हाट स्टूडेंट्स, हेपारिन हेल्प्स इन anticoagulant, right? It act as a anticoagulant, it act as a anticoagulant. Histamine and serotonin, they help in blood pressure regulation. अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया कम हो गया, रेगुलेशन दे हेल्प इन। ओके, सो अगर इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, अगर ये वाला याद रखो, थोड़ा ये वाला याद रखो काफी है। ओके, व्हाट इज हिस्टामिन एंड व्हाट इज हिस्टामिन स्टूडेंट्स, इज बेसिकली histamine will reduce the blood pressure, serotonin will increase the blood pressure. Students, do you want to know how, do you want to know how will they increase and decrease the blood pressure? Well, how will serotonin do? Serotonin, all of you want to know? Students, it's called as vasoconstrictor. Do you want to know why it's called as vasoconstrictor, students? Do you want to know why it is called as vasoconstrictor, serotonin, and why histamine is called as vasodilator or vasodilation? Students, do you want to know? Do you want to know or not, students? If you don't want to know, I will not tell. I'll keep it a secret. Secret information. Students, listen, it's fine. So, serotonin will do what, students? Understand. Serotonin will generally act as a vasoconstrictor. मतलब क्या है? It'll make sure the blood vessels are very thin blood vessels. So, if it is thin blood vessels में क्या हो जाएगा? Blood pressure obviously बढ़ेगा ना? बढ़ेगा. While histamine will do what? Dilate the blood vessels. Dilate the blood vessels. So blood pressure will drop here. Okay, blood pressure will drop here. What students will remember? Okay. Now all of you remember neutrophils. Students, neutrophils are the most abundant, 60 to 65% of total WBC. Nucleus is multi-lobed. These phagocytic cells which destroy foreign help in destruction. Then basophils हो गया, eosinophils resist infection and are also associated with allergic reaction. Students, यहाँ हेडफोन दिख रहा है ना, हेडफोन। So students याद रखो, आप स्नीज करते समय आपका हेडफोन्स गिर रहा है, स्नीज करते समय आपका हेडफोन्स गिर रहा है। सो इसके अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज हेडफोन शेप न्यूक्लियस, है ना। इस यहां पर एस शेप होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। Now students, now let's talk about lymphocytes and monocytes. This is very easy, students. Monocytes again are phagocytic in nature, just like your neutrophils. Monocytes are there. T lympho and B lympho, all of you know, they mainly help in protecting our body, right? Our body, students. Is this more information you'll study in your this chapter, students. What is that chapter called? Human health and disease. They will study more. Just remember, T lymph and B lymph are present. Okay. T lymph and B lymph are present, students. Now, see here, students. Neutrophils, eosinophils, basophils, monocytes, lymphocytes, and neutrophils. Now, students, do you know why they have weird shaped nucleus? Do you want to know, students? Why do they have weird shaped nucleus? क्यों इस तरह से? कुछ तो यूज होगा ना, इस weird shape का nucleus का कुछ तो यूज होगा, वरना ऐसे ही हो गया. Do you think there is a use for it? Weird shaped nucleus? Students, it is. Very weird shaped nucleus, very useful, because all the WBC mainly functions as protection. Now all of you imagine, these are present in the blood, right? They're present in the blood. Now if they have to move outside, the blood vessel, they have to squeeze outside, right? Diapedesis, they have to squeeze outside. Yes. So all of you tell me, which will be easier? If we have weird shape like this, it can bend the nucleus and squeeze outside like this, So it is very technical. So this entire different shapes of your weird nucleus helps in squeezing out of the blood vessels and to reach the target region very fast. So students, very smart people, very smart our body is. Okay, very well designed our body is, very well designed. Okay, different है हमारा. Monocytes is kidney shaped.
Eosinophils is your headphone. Students, it looks like E, no, almost. This headphones looks like E. Headphones looks something like E itself, है ना? Looks something like this. यहाँ पर एक बना दो E हो जाएगा पूरा. It looks like E only. Eosinophils E only. Students, platelets are students, remember platelets are actually fragment of cells. They're not cells actually. Platelets are actually fragments. Right? There is a mega platelet is there. Okay, mega platelet something is there. That mega platelet will break into fragments. Those fragments are these platelets, and they do not have nucleus in general. Okay. No. यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, और ये किस तरह से यहाँ पर बहुत सारे देखो न्यूक्लियस, तो बहुत वियर्ड मल्टीपल न्यूक्लियस कैन बी सीन हियर. No multiple nucleus like that. So next is thrombocytes. Thrombocytes are what, students? Thrombocytes are basically your platelets. They're basically the platelets, clotting proteins. Okay, also called as platelets. We have good amount of platelets per microliter blood, students, good amount. Okay, function is blood clotting, release thromboplastin to initiate the clotting. So this I will teach you in the clotting, how does the clotting mechanism works. Okay, next class I guess. Right, so thromboplastin will help in the initiating clotting factor. So they basically help in clotting. Now why clotting, students? Imagine if you have a wound and megakaryocytes. Yes, students, if you have a wound, if you get a cut, bleeding will keep on happening. So if you want to prevent the continuous bleeding, you need to have the coating here, and that is because of mainly because of thrombocytes, clotting. Okay, clotting, students. I think, students, we will stop today's class here itself, right? I think we'll stop class here, students. Or do you want to do AB? Students, we will finish this. It's very easy. Do you want to finish it, students? Do you want to finish this chapter today? Not chapter, this topic also today. We'll finish until ABO blood grouping. Shall we? Students, 1 minute. Phone बहुत गर्म हो गया, 1 minute, students. Now, students, now. Shall we finish this? थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, स्टूडेंट्स, वी कैन फिनिश इट एक्चुअली, और इट्स फाइन. टुडे विल फिनिश अंटिल हियर. ब्लड ग्रुपिंग हो गया ना, काफी यहाँ तक, स्टूडेंट्स. ओके, राइट, यहाँ तक काफी आज. ब्लड ग्रुपिंग तक, ब्लड ग्रुपिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम. नेक्स्ट क्लास में हम टुडे वी लर्न अबाउट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ योर ब्लड, है ना. प्लेटलेट्स हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, आरबीसी हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, उसके साथ आरएच और एबीओ दोनों एक साथ पढ़ेंगे, तभी मजा आएगा. अगर आरएच सेपरेटली किया और ये सेपरेटली किया तो मजा नहीं आएगा, ठीक है. सो एक साथ करेंगे अभी हम दोनों को. सो आरएच फैक्टर, द आरएच ब्लड ग्रुपिंग एज वेल एज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. Okay, along with the next chapter, along with the next topics. Okay, students. So all of you, thank you so much, students. I will see you in the next class. I will see you tomorrow. Students. Tomorrow is Thursday, right? Tomorrow is Thursday. So I will meet all of you tomorrow, students. I think we have a class at 6 p.m. But I will try to take the class little late at 8 p.m. or 9 p.m. tomorrow, because I have one more class at 6 p.m. tomorrow. Okay. Tomorrow I'll be teaching human reproduction. No, tomorrow I'll be teaching plant kingdom, right? So I have to take that class somewhere else. So we will take this class after some time. Okay, students. So thank you so much, students. Bye bye all of you, and I will see you in the next class. Until then, keep studying, students. Do not forget to revise all this. Notes will be given to you in the description. Bye bye all of you. Bye bye. Bye bye, Sharmita. Bye bye.